Hello, good evening. Let's start. Hello. Very good evening to all of you. So Amit, we are live, I think. Yes, we are live. I'm just checking. Let's start. Yeah. Yes, we are live. Fantastic. Hello. Very good evening to all of you. Good evening. Amit, we are live, I think. Yes, we are live. I'm just checking. Let's start. Yeah. Yes, we are live. Fantastic. Yeah. मैं आपको just pin you and me. Yes, all set. Fantastic. So great to have. Welcome to all the members and all the members of our community who are routine paid members or even you're attached with our group in whatever form. I welcome all of you, and it will be a power back session today. We'll be discussing a lot of questions. Yes. So let's start with the usual thing, and then we will deep down into the questions. Okay. Even if before starting question, we have one question given by Vijit Ranjan. Okay. Yeah. So, how many of you are coming for the first time in this inner circle call? Please type FT in the chat box. Please type FT for the first time. Yes, Abhijit Ranjan, welcome. So we can. Samantha, welcome. Okay, fair enough. So we'll start with the rituals. How to ask question? You can write in the chat box. We'll answer you. Yeah. Yes. So yeah, we will enable you. You can type in the chat box also, or you can just raise your hand. I will enable you. You can ask directly. Okay. Okay. I'm just looking at YouTube. Two of us should be there, but only one video is there. Anyway, let's गैलरी व्यू कर दो. हाँ गैलरी व्यू कर दो. क्या कर दो? गैलरी. गैलरी व्यू. So उसका गैलरी व्यू है. Jay is saying that initially I saw both of them side by side. Yeah. Let us start. Yeah. So what is the problem we are solving? Vision, mission, and who will do it? Okay. What is the problem? Ours is a Doctorpreneur Academy, and we are solving the problem because the problem is present healthcare system, whatever we're having right now, is broken, and we have to sort it out because now multiple trillion economy doesn't make sense. We're not a healthy economy. We're not healthy people, right? So we have to sort it out. We saw in Corona how bad shape it was. Though we can keep some respect that okay, we manage better than the Western countries. But there are multiple factors to that. We saw the real, true face of our healthcare was absolutely in shadows. So it has to be rectified. What is our vision? The vision is to enable the universal access to quality healthcare for all the Indians by 2030. And how will you do it? The only way to do it is to build the world's largest society of healthcare leaders. Leadership is one thing we are really lacking in a healthcare way. And who will do it? Nobody's going to come to do it. We have to do it together as a community, as a population, as a doctors community. We have to take the steps on our own, be strong, and be rich and powerful so that we can influence and we can become the influencer of the society today. Fantastic. So quickly, let's go through the code of honor.
we will discuss a code of honors are the common values which we are abide by as a community. Okay, so quickly we'll go through it. The first code of honor is freedom, that we live on our own terms. No one is there to dictate how much to work and how much to grow. So freedom is one of the most important pillar of our community. Second is growth, unlimited in our own hands. Okay, how much you want to grow is decided by you, not by anybody else. Corporate uh, vision and corporate form of promotion strategy, nothing. It's up to you. Third is clarity. You should be very, very clear about professional, personal, and spiritual clarity. When all three are aligned, you are an unstoppable force. Fourth is efficiency. We have seen the most successful people in any domain, and especially in healthcare. If your speed of implementation is fast, you are quick decision makers, even though you make a few judgmental errors. But if you have a speed, then you are more often than not you will be successful. Okay. Fifth is abundance mindset. This is one of the critical area which we work on, mindset of the people, because a lot of people think that there is a lot of competition. There are only one source of income, and as a number of people are increasing, your pie is getting reduced. So let's think about abundance mindset. Have multiple sources of income. You can have within your healthcare domain, you can have multiple sources. You can have beyond multiple beyond healthcare as well. So we have to increase our vision for that. Sixth is transformation. As you come inside and after your stay here in the community, you should be growing. Yeah, you should be becoming better version of yourself every month, every year. So that transformation should work. So right now we are having this 21-day challenge, right? So the 21 one video, one challenge. See, after 21 days, the people who are participating, you will see the change, how comfortable they are in video making. So that transformation should happen in every You aspect. can actually see your first video, and your current video. You can see the change in yourself also. Correct. And the overwhelming response, a lot of people are creating videos, so that's a fantastic thing, and they will share their journey after 21st year, 21st day. They will see that how much transformation has happened, how much empowered they will feel. And I hope most of people here have also participated there in that event. Okay, so integrity is seventh pillar, which means the purity in thought, virtues in action. What you are thinking, what your hand is saying, what your mind is saying, your heart is saying, everything is in sync. Right? Okay, and you have the, because in this domain, even though we call as a business, but it's a business of different kind, where lives are there, people are they trust on you. So the virtuous in action, and you have the intention should be very clear, very pure. Then only you will connect with the people. And the last and important is the contribution. You're giving back to the society. How much you give back to the society. That is very important, because you cannot take everything from the society and not giving back to the society. That will there will be disconnect. And if you really want to be connected with the environment, you should be giving back to the society. It can be any form, even your staff, your peers, your patient. You can give in any form, but you should be have the intention of the mindset of giving back to the society. Okay, so these are the 8 pillars which we always talk in before starting our inner circle call. Now we will jump to the taking questions and answer. Okay, after a while we are doing this thing, so let's have it great session today. Okay, good. Okay, so let's start having the first question, which and you can raise your hand also. We can have one-to-one call also, or you can drop in the chat box as well. Okay, so Abhijit Ranjan was asking about the developer. Okay, yeah, I have replied, Abhijit ji. I have also replied in to Pooja also. She shared your question, and the thing that the monthly retainership of BCC is quite a higher side, so you cannot afford it. So take it stepwise. Okay, the first step for any. Okay, so let us reframe this question and understand what Abhijit is asking. Okay, now Dr. Abhijit is asking that he is going to open in a hospital or clinic, and he is okay to spend on a one-time investment in of building website and other digital stuff, and but monthly recurring digital marketing spend is quite high. Okay, so what to do in that scenario?
Okay, so that is the main question of Dr. Abhijit. Now, first of all, congratulations for building your gastro liver clinic. Okay, this is why that too in Gurgaon. That means a lot. Okay, you must be very proud of you and yourself and your family who have actually started this thing. Okay, so that is first thing, and second is that you are okay with getting the things done for the first time is also very good thing, because a lot of people do not spend on the first stage also. So having a good website, having good social media handles, Google My Business, all those things, even though if you spend 1 lakh rupees for them, it is okay, because it is a one time effort for next 20 years. Okay, so you should have a very good professional looking website. Everything is mentioned properly, integrated, or your WhatsApp is integrated, your appointment system is there, calendar system is there. So all those things needs to be done. So yes, fun time investment is worth, because if you see, you have spent maybe 1 CR in your clinic or hospital, and you are just spending 1 lakh on a digital infrastructure, which is doable, right? You should be very willing in the mindset that everything, all my physical infrastructure will run when my digital infrastructure is also intact. Okay, so that is the given part. So that is okay with you. You are already spending. Now coming to retainership, where every month you will spend some amount of money for digital marketing. Take it step by step. Okay, first build this digital infrastructure, one time cost. Okay, and then have a small like small baby steps. Start with 20,000 per month, right? So have your handles, social media, all those things done, few posts and all those things. When you are comfortable, start with Google My Business and Google AdWords, paid marketing. Okay, apart from whatever amount of money you are giving somebody to make post and taking care of your social media, have paid ads. Okay, maybe 500 rupees a day, 200 rupees a day. Start with a very baby step, and slowly grow it for 20,000 to 40,000, and you will start seeing results after a few months, and then you can increase to 60,000, 1 lakh. Because in metro in Gurgaon, I think 1 lakh rupee, if you're spending on marketing, and you can generate to a 3x 5x revenue, then it is worth. Okay, without marketing you will be nowhere in the game, because a lot of people are already doing high level marketing there. Okay, so start with 20,000, 25,000 per month, and grow it to the 1 lakh rupee per month. That will give you enough confidence that whether I should increase it from 1 lakh to 5 lakh also. Okay, it is possible that you can spend 5 lakh rupees a month also. Depends how much aggressive on growth you are. Okay, So it is a gastro hospital in Gurgaon, right? Yeah, gastro and liver clinic in Gurgaon. Abhijit. Abhijit, yes, are you clear about that? Yes, sir. It will be built in 1 month. So I had already taken the agreement with the developers. Okay. So it will take, sir, we are getting the interiors done. It may, so I was in the process of getting it done, sir. Fantastic. So Abhijit, it is actually like, अब अगर हम पौधा खरीदने जाते हैं तो पौधा आपने अच्छा ले लिया और उसका मतलब मक्का भी अच्छा है, पौधा भी अच्छा है, पर अब आप उसको रिकरेंट पानी नहीं देंगे, अगर उसको ध्यान नहीं देंगे, it will not grow, right? It is a part and parcel of the game. right, sir. Go slow, but you have to definitely go ahead. You can take small steps as you are comfortable. You can increase the spending. You will realize on your own that now it is time to increase the spending. Right? Sir. But keep it in mind and do it, because once there is a gap in between, then you have to again start from square one. Right, sir. Yeah. There are things, sir. Go ahead. Go ahead. And I would like to ask. Yeah, please go ahead. First of all, actually, I was preparing for a gastro and liver clinic, but then for multi-specialty. But as you told that this is never your first, this is not your last project. Yeah. Just first. It's a milestone in your journey. Yes. So how to stepwise, sir? When should I stepwise this process? Right now you have a clinic. It's about to become begin in 1 month. So I was practicing in few of the corporates nearby as a some are 2 to 3 hours of part-time hospital.
So they were all Perfect. getting getting calls from bigger hospitals, but I was not sure because recently, 2 years back, I completed my DM from ILBS New Delhi. So I was thinking not to join a big corporates, but because I wanted to develop myself. So then I had joined few of the good hospitals like RV Healthcare, other hospitals nearby, Apollo, Miracles. Hmm. So I was trying to start my own clinic, sir. But then meanwhile, I saw your um, this doctorpreneurship, and then I was more inclined to get a multi-specialty type of. But then you must be knowing that there are the land cost is too much high, and then getting an rented in the old Gurgaon is very difficult to travel every day, so it's too much packed over there. So I had a SU. It is shop come office property. It's almost 300 square yard. I have bought it, but I don't know the policy if I can start a healthcare. Although Apollo Miracles and Rainbow hospitals are based on the same type of SU based hospitals. So that may be a transition. So this clinic I am taking from a rented purpose, but that will I may develop into a multi-specialty hospital. But I don't know the policy of the Haryana if I would be able to make that as a healthcare, or there may be some restrictions in policy like you cannot admit patients in emergency. Like Apollo Miracles, there are three sectors, three branches in Gurgaon, sector 57, 14, and 82. But they are some of the hospitals in few of the branches like sector 14, they are not able to admit patient in emergency through emergency. So if, any road traffic accident patients are not allowed to get there. They are running IPD patients, but then there are few restrictions. So I wasn't aware of these policies. So I'm very new to this place. I was initially in Delhi. So how to get to know those policy, if I can start implementing those policy in that party which I was thinking about. Maybe in 2 years I will get the position of that. Meanwhile, I was trying to start a clinic. So that was it, maybe a transition period. So it's perfectly okay. One way to connect is you find a lot of members are from Gurgaon. Okay, a lot of members are from Gurgaon in the community. So go to the society and type Gurgaon, search Gurgaon. Lot of people, lot of doctors who already have clinic, hospitals are there. Connect with them one to one. Okay, follow them Okay. and drop a message. More often than not, people will respond to you and help you. So whenever you have a problem, local problem, that platform becomes very like useful. If you will try to use it in a proper way, it will become very helpful. So go and direct contact them and ask this relevant question. Okay, in local Haryana or this sector, whom to contact or what is the policy. That will help you a lot in finding this thing. And then you can go to the websites of municipal corporation and get few things. We have also collated some of the orders and some of the things in different cities. But for a specific problem like for Gurgaon, we can search for some government orders and share with you. Okay. Sure. Abhijit, in the beginning, let me tell you, first is like you have OPD clinic, you're planning an OPD clinic. So you can focus on an OPD clinic with a daycare facility. Yes. First thing first. And whenever you are starting an indoor facility, don't do it a half-hearted effort. But what happens that once you start the indoor, then you have to take the emergency patients. It is almost a rule everywhere in the country. You cannot deny emergency. Yes. Road traffic accident and all those people you'll have to accommodate. And you have to give the primary or the basic treatment. So don't do half-hearted effort. You start your clinic first. If it is possible, then you can start with a daycare unit or a pharmacy together. And once you have the facility or you have 2 or 3 people with you which are like-minded, you can have a polyclinic or a polyclinic with a daycare facility, and then later on go for a indoor facility. Right. Right. Would I be practicing hepatology or gastroenterology? Although there is nobody hepatologist in Haryana. See, hepatology is like you can have that your niche as a hepatology, but the overall market will gastro will come to you. So you're a gastro physician with specialization in hepatology. Right, sir. Right. And go step by step. I think clinic is good. You're good to go. Focus on it. Tie up with people who can look for trauma people or emergency people, and you have a good tie up. Then it can work in sync, and you will also understand their side of working,
and then when you grow, you step to the daycare and then to the inpatient. Okay. So when should I stop make a transition from the corporate hospital to clinic? Okay, so corporate transition, yes. So that is a nice question. A lot of people are in that phase where people are making transition from corporate job and to their own clinic, right? So Right. what is the status of your? Are you married? Yes, sir. I'm married. What is the status of your wife? She is a doctor and she's also working. So she is a assistant professor in NCI AIMS Jajjar. She is in Department of Gynae Oncology. Okay, so your one income source is stable, right? Yes, sir. Yes. Okay, and the second question is: will your corporate setup will allow you to work half time there and half time in your clinic? Yes, sir. They are okay with that. Okay with that. Okay, I so can. yeah, so go with that. Make a smooth transition. Okay, and do not have a knee-jerk reaction. Like you can do it. Some people do that who are very confident and aggressive about that. I can run my whole clinic and I can replace the salary in few months, whatever I earning through the clinic. So few people do that. If you're very confident, you can jump. Otherwise, you make a smooth transition. In the next for the next 3 months, have half time there in your corporate setup and half time in your clinic. Slowly you will be able to understand if in a half time I can get X number of people attracted to me. If I commit fully to the clinic growth, then I can double or triple it the inflow, right? You will get you will gauge the flow and what is there lacking. So make a time period of 3 to 6 months for this transition and slowly transition into full time. Finally, you have to be there full time. That's the goal. You have to leave one thing and focus on fully on your setup. So from your perspective, sir, what are the pain points patients feel when they are in clinic? Because since I'm the first person, I'm the first one to start the clinic, and the patient does not only wishes for a good doctor; they also wishes for a good services, staff, waiting period. So in tier 1 city, these things comes into consideration. So what are the important points when I'm developing a clinic where I will feel that these are the pain points of the patient and I should take care of those? I think quality services are important, like attending the patient first of all with from the receptionist part to then waiting period not be more than 10-15 minutes. How to deal which are the crucial time, because I have seen the reviews of the good doctors who are running clinic in other department, but then they are not they have complaints like they have good long waiting period. They say that the staffs are not rude although the good doctor is good in the clinic. Correct. And then these are the few pain points of the patient. So these points are very important, I think, when you make a transition, because that will ultimately have some effect on your brand image. Absolutely. Very basically two things are there. First is like you're planning to start a clinic, right? Yes, sir. You're planning to start a clinic. Right, you are sir. not having your own clinic, no? No, so sir. one, you are planning to start your clinic, you will require some place where you will admit the patients. So for that admission or the indoor patients, you have to tie up with some good hospital. That should not be very high-fi corporate also, and it should be near to your place, so that you don't have to refer to a distant place, that to go that place and then take my name. Not like that. It should be easy for the patients to go from the clinic to that hospital and get admitted also. It should have a good reputation, good name, good services. Especially in tier 1 city, they will require good services. And for the patient waiting thing which you're asking, you should use the this patient management system and the appointment online automation very efficiently. Nowadays, all these newer gadgets and newer software, the patient's waiting time can be reduced significantly. Like if he's having a 3 o'clock appointment, then he'll come 2:30 and he'll get a reminder call or a reminder SMS, things like those. He did not be waiting for 3-4 hours in your clinic waiting for you. And your timing in your clinic should be predictable. If you're saying that I'm going to come from 3 to 5, then you should be available at 3 o'clock. And you have to plan your day like that. And see, because in a city, everybody's time is very precious. So they don't like to wait. Right. So they come from far areas and so much of traffic. So they expect that you are there at the time when you are told that I'll be there.
Exactly, sir. And 2-3 points for clinic management. One is, see, your staff will behave, or they will behave to the with the customer as what you have as a leader has grown. Okay, you when you present, you talk to your team, you should be very focused on customer service. Okay, now the people who are looking up to you, your staff, they will see that, okay, sir is so focused on customer service, and they need he or she needs to be in that format. People will put effort. If you are not focused, then these people will not never be focused. So first you have to take a weekly or twice a week meeting. Okay, in the start you should have a daily meeting in the morning with everyone in the staff, and tell them what is the target, and how should we behave, and what are the feedback I am getting from. So share the things with them. Okay, they are also looking for growth, so you should tell them that, okay, this is how the things are going. I am looking for this thing, and then now this month target is this one, and all those things. So I am giving feedback, so they should understand that their behavior is getting accounted, right? If they are doing good, that is also accounted. If they are doing bad, that is also accounted. And that can only then you have a good two-way communication with your staff. Yes. Second is, tell them to have a smiling face. Smiling face is always sellable. Everyone, even if wait time is higher, if staff is cordial, they're smiling, even then the customer or the patient will stay and they will be happy. Okay, so smiling face is always sellable. Third is, even if this waiting period, in between waiting period, how you can utilize people's time for their benefit and for your benefit. Should focus on that for everyone who are listening here. Let's say you have an average waiting time of 30 minutes. Okay, now think how I can add more value to that person's life in that 30 minutes. What can I do? Okay, you can ask people to download an app in that period and see your videos, or tell them that, okay, this is the link where you can give feedback. You can ask your question, which can go directly to the sir, and he or she will answer you after your checkup. So people should engage, right? You can, all your staff should have that link. Send them a link to WhatsApp number. You can have a video running, which is very informative in terms of health, not on the disease. How you can manage, how you can keep healthy in your waiting area. You should have pamphlet where people can read in the regional languages. So focus how I can add more value in that waiting period, and add to your brand as well. Okay, then the third important point is, get a very good practice management software or HIMS, where your queue management system is very good. You have appointment system where you can give them 1 hour before. You can send SMS and WhatsApp that this is your appointment is fixed, and follow up with them. Okay, Yes, so I have taken the OnePlan software, sir. so fantastic. So integrate everything there and start using. A lot of people take software but they not use it. Yes. So your intention should be is to use that software. How better how you can use it will depend on you. Okay, because every software has a good capabilities. And the last important point is follow up. Okay, try to reduce follow-ups of the people. If there is a only maybe some diagnostic reports or some other follow-ups or something which is not very urgent or not required them physically, try to have on video. Okay, have a telemedicine platform. Okay, try to reduce their burden, because again, if your traffic is painful for you, for them also it is painful. So coming again, waiting again for reports sharing, it is not a good way. Right now you have a technology so much. So use telemedicine for follow-ups, then it will be. So overall, if you see all pain points in a certain whole ecosystem, if you develop how to deal with those patients, sir? How to deal with those patients who always call? They take them us as a granted that they will call. See, nobody takes you granted. Only thing that you have not put the systems. Okay, say somebody called you on, fantastic. It is good people have called you for consultation. Now you should have system in place. So send them. Okay, you listen to them and you reply. There is can be auto reply, and send them a payment link. Okay, so okay, this is the consultancy charges. Pay on Google Pay or pay on this link, and you will get a slot for a consultation. Just
People who are serious will pay for the payment, and they can go to the appointment system. So from payment gateway to appointment system, and then from appointment to their WhatsApp and mails, all circle is complete. So once a person has paid and got an appointment, people will come and see you. Okay. So will it be done through WhatsApp, sir, or All the software? non-genuine patients will be filtered. Same software? All the non-genuine patients will be filtered. Non-genuine person will filter who are looking for free advice. You for free advice or people like that, you should always have, like what we are doing. You should put lot of videos on your specialization on YouTube. Okay, anybody who's looking for free advice, send them a YouTube link. Okay, go and watch it. I've discussed everything. In this way, your viewership will also increase. People will get some information, and then they will feel, okay, this person is very genuine. They will have an appointment book for you. So that will be done through that same software, sir. Yeah, you should have WhatsApp integration with the HIMS. If it is not available directly, you should have a business WhatsApp, and there are a lot of software integration is there. WhatsApp business integration is there. You can have one few software and tell your receptionist to how that can happen. And because you will share your link or payment link through WhatsApp only. Okay. Do you have any agency contacts, sir, that once Yeah, you have? I will connect you with a WhatsApp person. Yeah, like how we use. I will tell you how you can use WhatsApp for that. Sure, sure. Okay. Sir. Okay. Thank you so much. Thank you. Fantastic. I think they are all relevant to everyone. Thank you, sir. Thank you so much. Okay. Fantastic. Yeah. You can raise anybody who want to raise your hand, and then we can enable you. Okay, I'm looking in the chat and will directly call you. Okay. Dr. Sarika Chavan is asking, I am Dr. Sarika. I have OPD polyclinic in one area, planning to start another OPD in demanding area, but I will sit there for 3 hours. Rent is so high because it is of prime area. Okay. Rent will be almost more than 50K. It will be high for 3-4 hours for me. What else pediatric facility I can add there? So it will benefit for patient or me. Okay. Dr. Sarika, are you there? Can you? Yeah. I am putting you on spotlight, and you can ask your question because I'm not able to understand everything what you have written. Yes. Good evening, sir. Yes. Good evening, ma'am. Yes. Sir, I am your silver academic member also. Okay, fantastic. And, yes, sir. I'm already having one OPD in one area where demand was more. So I'm regularly having, like since last year, my patient increased this year. Now there are another area where demand is more, and my clinic is far away from that area. So patients are asking to open the one more OPD in that area, which is my residential area also. So whoever my society member, neighbor, and all are township, almost 10 to 15 more township. Each township having 1,000 to 1,500 families. So almost 1,000 township having 5,000 population. Like that, 4-5 townships are there. Okay. Demand is more. So I'm planning to start one OPD in that area also. And I'm planning to do OPD practice only. I'm not interested in IPD basis. Your background is which branch? So pediatrics, sir. Right. Yes, sir. So like in that area, because that is a prime area, so rent is almost 50,000 to 75,000 for 300 square feet area clinic. Yes. So that for 3-hour OPD, it will be like too much for me for spending almost 50 to 75,000 for that OPD. So I'm planning to start some like either lab or pediatric nutrition or neuro, whatever, which is helpful for that people according to pediatric clinic, like obesity clinic or psychology or whatever. In your absence. In my absence. But I don't want to start as a sharing basis. I want like it is my ownership and I am keeping people under me. Yes. So what I can do for that? I have few ideas. Pranav sir, you want to say something or? Yeah, actually, see,
the 3 hours you are utilizing and the rest of the time somebody else is utilizing. So you have to have really reliable people who will run the show for the whole day. From your practice, you can derive that what type of majority patients you are having. Like if they are more of infection and nutrition, you can have a nutritionist. You can have child psychologist. You can have adolescent specialist. You can have therapist for the speech and all those things. Okay. You can have pediatric physiotherapist also. Neuro patients are coming. You can have a place for the specially or differently able child which are having low IQ. Yeah, like therapy which required occupational speech therapy or like. Correct. So all this you can try and test. One another thing you can do is that it is your residential area, right? Yes, sir. So actually, it is in front of AIIMS Nagpur, sir. Exactly in front of AIIMS. So you can also think about if you have a space in your house, which one room you can convert. Actually, sir, this is residential area, so commercial practice in residential area is not allowed. Yes, sir. Yes, sir. No, so some places it is allowed. So okay. You can check it. See, you can I think that first thing is about the investment which you are talking about, 50 to 60,000 rupees. Okay. Always when you see investment from that perspective, always see that how much return it is generating. Yeah. Okay. Now any place can be 1 lakh rupee rent also, but if it is generating 5 lakh rupees for me, it is not an expensive place, right? It is not expensive for me. When it is generating 5 times, that is not expensive. Even if the rent is 5 lakhs, if it is generating five times or more revenue, then it is not expensive. Not expensive. So expense is, how much expensive is, it depends on how much returns something is generating. So do not take the face value of it. Okay, face value is like 50,000 rupees. Now that face value looks very daunting to you because it is you are comparing with something else. So think that 50,000, can you generate 2.5 lakh rupees, 1.5 lakh rupees, 2 lakh rupees? If you can generate, then it is not expensive. Okay? Initially, it will be hard, sir. Like so think about that. If it is can generate, now think about when it can give you return. Let's say keep a 6 months period of time. Can that in the 6 months, can it generate 3 times, 4 times of the rent, right? So think about it. If it is possible, if you are saying it is not possible, whatever you're thinking, your mind is thinking, it will become true also. Okay. If it is possible, it will become possible. If you're thinking if it's not possible, it will remain impossible for you. So as I told, AIIMS Nagpur is in front of that location. So some pros are there, some cons also. Like their waiting period is 6 to 7 hours in OPD, AIIMS OPD. So patient can divert to my OPD also because of that waiting period. Or second, who is thinking that this area like AIIMS is serving for 10 rupees, and if I am charging 500, they will think in 10 rupees we are getting AIIMS consultant. If like that cons is key, people can divert there also. So you have not gone through the basic courses, okay? So you have not gone through that. I can understand. Not completely. From your answers, I can see. So go through the videos, okay? Go through the lectures. Go through those things, because you are not competing with the target market of AIIMS. Try to understand that, okay? And you cannot. I mean, don't try to compete yourself with AIIMS. Yeah. You are not in that target market is different. Your scale is different. Totally. Your number of hours and total put in by the number of consultants is different. And at the end of the day, it is not your target market. Yes, sir. So your target market should be complementary to what AIIMS is targeting, right? So for AIIMS, pediatrician, middle class, upper middle class people will not go. Okay, if there is no emergency, like if it is very, very critical, outside consultant are not good enough, then only people will go. Otherwise, for a normal consultation, people will not go because of the waiting period, because of the whole environment, because of a lot of things. So your target market should be high-end people or upper middle class people who are actually genuinely looking for a good service, right? Yes, sir. They are so there. Yeah. And try to give them good service and good patient experience. They should feel that they have spent 500 rupees, so it is worth it.
Okay, sir. Okay, sir. And Yeah. another thing that you when you are not here, like sir has suggested you a few of things, you can also have something like parenting coaching kind of thing for people near out. Okay. Yes. Lot of issues are there for teens or sub-teens age group, Yeah. where right now we thought that 13-15 years kids are having problem. Now even 7-8 years kids also have problem with how to deal. The parents do not understand how to deal with it. So you Yes. can have those sessions in the morning when you are not here. Yeah. You can tie up with somebody. That Somebody. will be a value addition for you. Okay. Yes, sir. Simultaneously, I have joined 2-3 certificate and fellowship courses like child psychology, Yes. diploma, like certificate course in nutrition Okay. and lactation counseling. So simultaneously, like this end of this year, I will complete all the certificate course and fellowship. So Yeah. from next year also, I can start that facility also for patient. Build second line of leadership in below you. Okay. You cannot do everything yourself. Everything. Yeah. Yes. So Yes. you have to make a good team. Then only it will work. So start focusing on finding good person who are good, who want to learn something, who want to do something, and Yes. then teach them and ask them to work with you. Yes. And please finish our 5 modules Yes, sir. Yes. so that you have some good new questions. Yes. 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 Thank you so much, sir. Okay. Thank you. Thank you. Fantastic. Yeah. Somebody raised the hand. Dr. Madhur Jain is asking, I want to start a multi-specialty clinic. I already have a constructed building, good number of pediatric patient. How should I proceed further? Multi-specialty, already have a constructed building, good number of pediatric patients. How should I proceed further? Multi-specialty with what are the different specialty you're looking for? That should be like, you should be clear about that. What are the other partners, because multi-specialty means that you will have few partners coming in, with you. So that partnership should be very clear, whether you want them as a consultant or do you want them to be partner in your clinic. If they are a partner, then that means they are also investing money into your setup, and then how much percentage partnership you are giving to them. So all those things should be clear. Okay. So multi-specialty in a polyclinic, partners will come in play. So you should be able to understand how, first thing is sort the partnership issues. That should be the first step. Once you are clear that how many people are coming, what kind of expertise they are bringing, if the whole is bigger than the sum of the parts, then the partnership is always good. Okay. So please focus on those things. And once you are clear about that and you already have a building, start with the architect. Okay. Even if it is a clinic or polyclinic, hire an architect so that it can give you a better usage, especially person who have expertise in healthcare, hospitals and clinics. Then it will give you a better usage of the space. And then that will be the 2 step. And after that, you can just go normally after construction, you can start the marketing thing. Okay. So 3 steps: get the partnership sorted. Second is your architect, interior designing, everything done. And the third is your marketing and branding activity should start ideally from 2 months before the start. And I'm hoping, assuming that the money part is already sorted. Okay. If it is not, then you have to go for bank loans and other kind of fundraising activity as well. Okay. Dr. Ankit Anil, you raised the hand, please. Ankit Anil. Yes. Yes, Dr. Ankit. हाँ सर. Yes, Ankit. Dr. Ankit. अमित भाई, प्रणव भाई आवाज आ रही है? हाँ, बट पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत आ रहा है. हाँ, मैं थोड़ा बच्चों के साथ हो. बाहर आया हुआ था. हाँ सर, आपका प्रॉब्लम नहीं हो तो वीडियो बंद कर दूं और हिंदी में कंटिन्यू करूं सर मैं? चलेगा. नहीं, बोलो बोलो. नहीं, आप वीडियो ऑन है, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, बोलो बोलो. अच्छा. अरे अमित भाई, प्रणव भाई, मैं अहमदाबाद में ही हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ. मैंने जगह ली है आगे शेला में. ओके. 5 से 10 बेड का हॉस्पिटल खोलने का प्लान है सर. ओके. अभी हुआ ये है कि 4th फ्लोर पे है शॉप्स मेरे. और मतलब यहाँ पे तो अहमदाबाद में तो आपको ही मालूम है सर, चलता है ऐसे, ऊपर हॉस्पिटल बनता है तो. हाँ, बाजू वाली जो 2 शॉप्स है ना सर, वो एक ऑर्थो गायनेक कपल की है. तो मैंने पहले सोचा है कि उनके साथ में करते हैं.
और साथ में मिलके मल्टी स्पेशलिटी टाइप का ले लो ना पापा, साथ में मिलके सब मल्टी स्पेशलिटी टाइप का करेंगे। लेकिन फिर बाद में उनसे टर्म्स ऐसे डिस्कस किए तो कुछ क्या है, उनकी 400 स्क्वायर फुट जगह ज्यादा थी मुझसे, तो ऐसे कह रहे थे कि आप 400 स्क्वायर फुट का पहले पैसा वो कर दीजिए सेटल, फिर उसके बाद में पार्टनरशिप में आते हैं। तो मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया, तो मैंने मना कर दिया। अभी उसके बाद में बोल रहे हैं कि साथ में मिलके खोलेंगे, ओटी भी बनेगा, लिवर रूम भी बनेगा, ज्यादा पेशेंट रख सकते हैं। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि खुद का अकेला करूं, एमडी मेडिसिन हूँ, थोड़े अपने जितने पेशेंट देख सकता हूँ उतने देखूं, जितना खुद से मतलब फार्मेसी के साथ में खोलूं। तो मेरे को सिर्फ ये जानना था सर कि ऐसा मतलब आपकी क्या राय रहेगी, कैसे करना चाहिए, कितना साथ एरिया में करना चाहिए? साहब मेरा मतलब जब उनके साथ में पार्टनरशिप की बात की थी तब कारपेट एरिया है ना 1500 के आसपास था। अभी सर 2200 के आसपास है, बाजू वाली एक और शॉप ले ली है, तो कारपेट 2200 का है, और शॉप्स के बीच की दीवार टूटेगी तो दूसरा 20-25 स्क्वायर फुट। सर एमडी हूँ, मेडिसिन हूँ। Why didn't the talks work out with those people? नहीं सर, वो सर नहीं वो अंकित उस पे नहीं जाते हैं। पॉइंट ये है, छोड़ दो। पार्टनरशिप तभी आप करिए इस कि बिजनेस सेंस बना रहा है, पार्टनरशिप तब नहीं होती है आपका। सो व्हेन वी partnership, you should have 3 V's aligned. Okay, when we talk about in the community also, or what are those हाँ सर, वो 3 V's, right? सर विजन है, वैल्यू है, values and velocity, right? So अगर आप देख रहे हो उनके साथ आपके वैल्यूज विजन नहीं मिल रहा है तो कोई मतलब नहीं है। चाहे वो बिजनेस सेंस बना रहा हो, चाहे वो आपको एक नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा दे रहा है, तब भी वो पार्टनरशिप होल्ड नहीं करेगा, ठीक है? वो एक लायबिलिटी बन जाएगा। हाँ वही सर प्रणव भाई, हुआ यही कि मतलब मैंने पार्टनरशिप की बात तो करी, अभी लकीली हुआ ऐसे कि बाजू वाली शॉप्स खाली थी तो मैंने ले ली। फिर वो कह रहे थे कि बॉस हमारे पास में तुमसे 400 स्क्वायर फुट ज्यादा है, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले तुम खर्चा करो, फिर इक्वल पार्टनरशिप में आते हैं। देखो माइंडसेट नहीं है, छोड़ दो, यू कैन गो अहेड अलोन, आपके पास इतना स्पेस है कि आप अपना देख के चालू कर सकते हो। हाँ सर, मेरे को तो सर मतलब इंडोर भी चालू करना है। हाँ, आर्किटेक्चर से प्लानिंग वगैरह भी वो 2D ड्राइंग में बनाती है, 5 से 7 बेड तो आराम से आ जाएंगे, ईसीजी इको रूम के साथ में, फार्मेसी के साथ में। हाँ तो आप फिर गो अहेड। और सर दूसरा इससे एसोसिएटेड मेरे को एक सवाल ये पूछना था कि जैसे मान लीजिए कि मैं कोई करता हूँ पेशेंट एडमिट एब्डोमिनल पेन का, एग्जांपल के ले लीजिए, यूएसजी करवाई, रीनल कैल्कुलाई आया, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मतलब मान लो कि बाजू में ही हॉस्पिटल है, उसी में होती है, तो यहाँ से पेशेंट को वहाँ शिफ्ट कर दिया उसने, तो सर उसका मतलब क्या मेडिक्लेम में और इन सब में क्या कैसा रहेगा? मतलब मेरे को डिस्चार्ज एंड ट्रांसफर दिखाना रहेगा, फिर वो वापस से रीएडमिशन करना पड़ेगा कि यहीं पे एडमिट रख के मैं वहाँ भेज सकता हूँ? मतलब आप समझ ही गए ना, अभी बाजू में ही दूसरी हॉस्पिटल, अगर प्रोसीजर करना है तो फिर वहाँ एडमिशन दिखाना पड़ेगा। अच्छा, फाइल्स 2 बन जाएंगी, लेकिन आपका मेडिक्लेम उस वाली फाइल पे होगा जहाँ पे इन पेशेंट हुआ है, ठीक है ना? और डिटेल में हम लोग एक आपका अहमदाबाद में हो तो आप मेरे को मेल लिखना। अरे बिल्कुल सर, आप ही के एरिया में रहता हूँ मैं। हाँ तो हम लोग बात कर लेंगे। बिल्कुल सर। और सर एक और सवाल पूछ लूँ अगर हाँ आपको एतराज नहीं होना? या सर ये पूछ रहा था, जैसे मेरी वाइफ है वो नॉन मेडिको है, तो उसके साथ में मैं एलएलपी पार्टनरशिप कर सकता हूँ क्या? हाँ क्यों नहीं कर सकते? मतलब जैसे सीए में होता है कि सीए के साथ में एलएलपी करेगा? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लीगल एंटिटी है। गाड़ी किसकी है? लीगल एंटिटी है, कोई कर सकते हैं। अच्छा, ये गाड़ी किसकी है? चलिए मैं म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? आपका बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज्यादा आ रहा है तो म्यूट कर रहा हूँ। फिर आप मेरे को मेल करना है, व्हाट्सएप करना, वी विल टॉक टू यू, ठीक है ना? राइट, ठीक है ना? ओके दिनेश शर्मा। यस सर। हाउ आर यू सर? अनम्यूट कर दीजिए सर पहले। हाँ अनम्यूट कर दीजिए सर। यस, या आई एम फाइन सर। मेरा नारनौल में हरियाणा में 20 बेड का ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है, एंड आई एम रनिंग दिस हॉस्पिटल सिंस लास्ट 25 years. ओके, and it is a well
हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक का काफी वर्कलोड है और पूरा अच्छी तरह चलता है। अच्छा और मेरे पास में अभी 1 एकड़ जमीन है मेन रोड पे, अच्छा और मैं इसको हॉस्पिटल को एक्सपेंड करना चाहता हूँ मल्टी स्पेशलिटी में। बट छोटे शहर में प्रॉब्लम ये है कि जो कंसल्टेंट्स हमको जो है वो ऐसे मान लो जैसे बाहर रहते हैं ना कि आगे चले गए और देख के चले गए, शेयर बेसिस या उस पे नहीं मिल पाते हैं। और अगर हम कंसल्टेंट सैलरी पे लेते हैं तो फिर स्टार्टिंग में, क्योंकि ये हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में बाकी पेशेंट्स को लाना दूसरे स्पेशलिटी को थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि नाम ही है जो हड्डी का अस्पताल है बेसिकली। तो स्टार्टिंग में वो जो अगर सैलरी पे कंसल्टेंट रखे तो वो एक हॉस्पिटल पे लायबिलिटी अननेसेसरी बन जाएगा। दैट आई थिंक सो, कि हो सकता है उसमें 6 महीने लगे पिकअप करने में, साल भर लगे। क्या जगह बताया साहब ने, जगह कौन सी है? नारनौल है हरियाणा में। नारनौल। तो वही मैं सोच रहा था कि अभी उसको कैसे किया जाए, क्योंकि छोटे शहर में जो लोग आते हैं उनको एक सेम अश्योर्ड सैलरी चाहिए, मिनिमम गारंटी टाइप, शेयर प्लस मिनिमम गारंटी। तो वो फिर बाकी भी हॉस्पिटल के साथ ऐसा होता है कि वो आते हैं और फिर हॉस्पिटल उतना सैलरी दे नहीं पाते स्टार्टिंग में, तो वो निकल लेते हैं फिर, या फिर थोड़ा डिस्प्यूट हो जाता है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है, तो कंसल्टेंट टिक नहीं पाते हैं। तो देन हाउ कैन आई गो फॉर मल्टी स्पेशलिटी? आप कितने बेड का बनाने की सोच रहे हैं? सर मैं 50 बेड का एक्सपेंड करना चाहता हूँ। 20 बेड मेरे पास है, मेरे पास 8-10 पेशेंट भर्ती रहते हैं ऑर्थोपेडिक के। 20 बेड से 50 बेड करना चाहते हो और 50% के आसपास ऑक्यूपेंसी रहता है। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली इसमें तो सर ट्रायल एंड एरर जैसा रहेगा, क्योंकि जो कंसल्टेंट आप लेके आते हैं उसको फाइनेंसेस के अलावा भी दूसरी चीजें अट्रैक्ट करती हैं। मतलब एक चीज हो सकता है वो वहीं का बैकग्राउंड अच्छा हो, आसपास के गाँव में उसका बेसिक फैमिली रहता हो, या फिर वहाँ आके सेटल होना चाहता हो, या फिर ही सीधा विजन इन फ्यूचर विथ यू। तो सिर्फ सैलरी आपको किसी को बांधने के लिए काफी नहीं होती। अदर थिंग्स, वर्क एनवायरनमेंट, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब भी उतना ही मायने रखता है, और तो ग्रोथ पोटेंशियल जो उसको मिलेगा इन विथ यू और अलॉन्ग विथ यू। सो यू हैव टू एक्चुअली थिंक ऑफ अ पर्सन लाइक दैट। अगर आप क्राउड में से उठाएंगे, पिकअप करेंगे, तो वो इतना चांसेस कम है। लेकिन अगर आप सिलेक्टिव सर्च करते हैं कि कोई कोई अगर जो डॉक्टर अभी एमडी मेडिसिन है या कोई अब एरिया किसी एरिया का है, तो वहाँ रहने के चांसेस, टिकने के चांसेस ज़्यादा होंगे। दोनों प्रॉब्लम है सर। अगर एरिया का है, यहीं का है, तो भी वो 2-4 साल बाद, 1-2 वो तो जाएगा ही 2-4 साल के, वो आप निकल लेगा। आप उसको कितने देर होल्ड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि उसको आप जाने से नहीं रोक पाओगे। हाँ ये बात है। रोक सकते हैं कि अगर उसका वहाँ रहना फ्रूटफुल रहेगा उसके लिए, तभी वो रहेगा ना। सर आपका प्रोसेस देखो, आपको क्या है, एक तो आप स्टार कंसल्टेंट को देखो मत। आपके साथ जो आएंगे ना वो जूनियर कंसल्टेंट, फ्रेश कंसल्टेंट आने चाहिए। वो उनको आपको अपना विजन सेल करना पड़ेगा। आप कहाँ पे आप मात खा रहे होगे, वो ये होगा कि आप अपना जो विजन है ना वो आप अच्छे से सेल नहीं कर रहे हो। ठीक है, जो नए भी जो आपको ढूंढना पड़ेगा कुछ लोग जो उस एरिया में रहने में या तो इंटरेस्टेड है या आधे आधे दे आर नॉट वेरी क्लियर कि यहाँ जाएं वहां जाएं। ठीक है, तो वो जो नए नए जो डॉक्टर्स होंगे, नए जो कंसल्टेंट होंगे, वो ऐसे स्टेज में होंगे। यू हैव टू टॉक टू देम, मेक देम क्लियर कि व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी। 5 साल में you can, how you can grow, how much name you can, fame you can earn here than comparison to the local big cities. So आपको you have to show them the whole scenario and then show the potential. Ask them to come and see I am expanding from 20 to 50, कैसे मैं उनको करना सकता हूँ, how you can become a partner in the growth. तो पार्टनर आपको कहीं ना कहीं इस तरह का पोर्शन बनाना ही समझना ही पड़ेगा कि you need people's सक्सेस इन योर सक्सेस। तो कहीं ना कहीं आपको वो सेल करना पड़ेगा। और चाहे आप अपने आसपास के एमडी कॉलेज या एमबीबीएस कॉलेज में जाओ, वहां से आप यू टॉक टू देम, लॉट ऑफ पीपल। कोई ऐसे आपको जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है ना, उनको लाकर कोई फायदा नहीं है। दे विल बी नॉट एबल टू सस्टेन फॉर अ लॉन्ग। यंग लोगों को और जो दे शुड हैव अ स्किन इन द गेम, मतलब उनका या तो शेयर होना चाहिए या तो फिर उनको आपके प्रॉफिट में से शेयर मिलना चाहिए। इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट नहीं है तो टाइम फ्रेम की गारंटी होना चाहिए कि 5 साल आप रुकोगे एंड यू आर प्रोवाइडिंग सम शेयर की नहीं है। शेयर तो मैं शुरू में उनको पूरा भी देने को तैयार हूँ। स्टार्टिंग में क्या है कि हो सकता है 6 महीने साल भर, जैसे कि
दूसरी स्पेशलिटी के पेशेंट्स आने में लगेगा, क्योंकि ये तो 20 से 25 साल से ऑर्थोपेडिक का सेंटर है बेसिकली। तो कोई बात नहीं ना, आप ये सोचो ना कि एक आप मिक्स कर रहे हो प्रॉब्लम को। देखो ये तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा। अभी आप HR प्रॉब्लम को मार्केटिंग ब्रांडिंग प्रॉब्लम से मिक्स कर रहे हो, ठीक है। HR प्रॉब्लम एक अलग प्रॉब्लम है कि आपके साथ कौन आएगा मल्टी स्पेशलिटी में, ब्रांडिंग एक्टिविटी कैसे होगी और कैसे लाया जाएगा वो एक अलग प्रॉब्लम, ठीक है ना। आप मिक्स मत करो इन चीजों को। तो ये एक का हॉस्पिटल और आपका जो हड्डी का हॉस्पिटल, ये 2 अलग एंटिटीज है। हाँ राइट, तो उसको एक प्रोजेक्ट की तरह चलाना पड़ेगा। उसको एक अलग प्रोजेक्ट के जैसे बनाते हैं, साइड में एक दूसरा ब्लॉक बनाते हैं, उसको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाते हैं। बिल्कुल, ब्रांडिंग अलग बना दो। उसकी ब्रांडिंग करने में क्या होता है, कुछ नहीं। एक डिवीजन ऑर्थोपेडिक है, एक डिवीजन दूसरा यूनिट बनाते हैं उसको साइड में अलग से नाम देके। यस यू कैन। और उनको जो आएंगे उनको मैं सोच रहा हूँ कि अलग से उनका विंग देके उनको फ्री होल्ड के तुम काम करो और में स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपका देखो सॉल्व हो गया ये काम। और परफेक्ट, जब आप ये चीज पे क्लियर हो गए तो लोगों को भी क्लियरिटी रहेगी, लोगों को भी लगेगा कि हाँ ये क्लियर है, 4-5 साल रुकने लायक चीज है। और देखो आपने 5 साल किसी को रोक लिया ना, इट इज वेरी लेस। फिर नहीं जाएगा, 5 साल में जाते हैं लोग, फिर नहीं जाएंगे। हाँ, तो वो जो पहला इनिशियली है, आपको एक बार उन्होंने भी ग्रोथ देख लिया, उन्होंने भी फेम देख लिया, पीपल विल स्टे विद यू। बिल्कुल राइट, ठीक है सर, फैंटास्टिक, ओके, थैंक यू। Dr. Srinivas is there. Yeah. Srinivas, yes. Srinivas Narayan Raju is asking, I am a vascular intervention radiology planning for vascular clinic setup with endovascular suite in Bangalore. Should I go ahead with a refurbished CAT? Okay. Is such a setup better suited for metro and tier 2 setup? Okay. So mainly the focus, the question is about refurbished CAT lab use करना चाहिए कि नहीं use करना चाहिए? और Bangalore में Are you there, Srinivas? Yes, he is there. Hello. Yes. Hello. Good evening, sir. Good evening, sir. Yes. Sir, the thing is, right now I am actually practicing as a regular consultant. So I am planning to set up my own endovascular clinic, at least in the coming 1 or 2 years. Okay. So I am very naive about all this. Anything about starting up a endovascular clinic, because in entire India till now I think there are only 4 or 5 endovascular clinic related to intervention radiology. So the main issue is the cost factor of setting up this clinic because of the high-end machines involved. So and setting up in a metro is what I am thinking, because we'll have a good patient inflow of all the strata. My 2 questions are mainly is whether when setting up this endovascular clinic, whether to go for a refurbished machines, and whether to set up this endovascular clinic in a metro or a tier 2 cities. See, what is the tier 2 city you are in consideration? What is the tier 2 city meaning, sir? Like basically, not a metro city, but near to. What is it your hometown? My hometown is Bangalore, sir. Okay, your hometown is, so you want to, for future growth, you want to go to the other city for okay, understood. No, sir, I do. No, sir. To be clear, I don't know whether to go to other city. Yeah. You're thinking of whether it's metro versus tier 1 city. Yes, sir. And also the refurbished, by getting a refurbished machines, especially for endovascular clinic. See, for endovascular, it is not so much developed. So even the metros have a good option and good, future growth. Then second thing is your refurbished or non-refurbished cath lab. It entirely depends upon your budget and the place you're going to put. It is not the cath lab you should think. You should think about the hospital or the setup which you're going to create, and in that you put the cath lab. Right? Okay, sir. So what are you going to have? You have a daycare unit with a cath lab, or an indoor patient facility with a cath lab, and you alone are going to go for it, or you are going to go with some other doctors also. Because see, you will have to have cardiac surgery or a cardiology backup for a procedure. So to tie up with them when you are doing vascular procedure. You not individually start one endo unit and then there is a complication. What will you do? So you have to create a backup for that also.
So What first, So basically, sir, there are now in endovascular there are a lot of procedures which can be done in a daycare even without CTVS or cardiology backup. So no, you can do it, but then you should have an arrangement with some doctors in case of problem who will help you out. Yes. It is not that that is out that of is 99 patients, one patient is going bad. We Yeah. don't want that to happen also. No? yeah, that is correct, sir. So I am Arrangement with somebody. you will be focused on what kind of surgeries, like varicose veins and all? Yes, sir. Varicose veins, uterine artery embolization, prostate embolization. Okay. Then So yes. see, first question is, like, since your hometown is Bangalore, you stay in Bangalore. Do not go to the other cities. Okay, do not think about. See, everywhere there is a scope. How you what kind of, how do you do marketing and position yourself in market will decide what kind of growth you will have. Okay, whether see, if you go to the some other Taiwan cities, yes, there will be flow will be more, but then your money per person income is also less. Okay. So in totality it will be similar kind of thing. But people who are from Tier 1 city, they will be more comfortable in that city, so that brings some kind of X factor. But since you are in Bangalore, you should be staying in Bangalore and opening up this thing and position yourself in the vascular into surgeries. And especially you can just focus on varicose vein. We have in Ahmedabad there is a good 2 centers of varicose veins that are right. I can make you an introduction with one of the person who is a member and a friend who has a very good vascular varicose veins focus clinic. He has built a very fantastically looking clinic, and good investment has been done. But you may not require that kind of fancy clinic, but he has all the procedures. So you can talk to him and discuss the details about your investment and other things, because he has developed it very good, and he is very good in marketing also. Okay, so definitely, sir, actually we need some role models in this area who have actually done. So if you can somewhat suggest and recommend, we can make a meeting and actually we can visit their center also. And I will let you know. And he is a very good person also. He will help you a lot. And regarding the refurbished cath lab, yes, sir. If you are planning to buy one, then it should be a good company standard and it should give you sales service in Bangalore. Okay. And they should have at least 4 to 5 years of EMC and CMC. Then only buy that. You can go ahead with the refurbished cath lab is good. If it is from Siemens, maybe GE, maybe Philips, they are of good condition. They provide CMC, EMC all the for 5 years. You can go ahead and you can get finance from those guys also. In initial years, 2-3 years, you can go with the refurbished one. No problem. Okay. Okay. We'll connect you with drop me a mail also, so that I don't forget it. Okay. Sure, sir. Okay. Awesome. Thank you. Thank you, sir. Okay. Deepika ma'am is asking, I started my solo clinic. Should I have an OPD in a hospital also for admission for few hours? Deepika ma'am, are you there? Yes, she is there. Yes, ma'am. You can start webcam and ask. You've seen your reels, so yes, you're good on camera. Ma'am, reels का कैसा चल रहा है आपका? बहुत अच्छा चल रहा है. Yes. अरे वाह, thank you so much. Yes, ma'am. बताइए. मैं आपके साथ जुड़ के पहले भी थोड़ा ट्राई कर रही थी, पर आपके 28 डेज के चैलेंज से ज्यादा इंटरेस्ट आ गया. Very good. सर, एक तो मुझे अपने क्लिनिक का नाम बदलना है, तो वो बदल सकती हूँ मैं? मुझे क्लिनिक स्टार्ट करते हुए ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए. हाँ, ब्रांडिंग चेंज कर सकते हो आप. कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है ना वो? नहीं कोई. लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है. आप थोड़ा सा 1 महीने और मार्केटिंग में एक्सपेंड करोगे तो पिछला वाला भूल जाएंगे. अच्छा, फिर दूसरी बात है कि मेरे ओपीडी से भी एडमिशन जल्दी आ नहीं रहे. लोग जैसे ओपीडी ट्रीटमेंट में ही थोड़ा बिलीव कर लेते हैं, जल्दी एडमिट नहीं होते हैं. तो मुझे जो हॉस्पिटल में मैं जहाँ पे 1-2 घंटे ओपीडी रहती हूँ, तो वो कंटिन्यू करूँ क्या कि वहां से एडमिशन आ जाएंगे, जल्दी से टेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि उसका ब्रांड बड़ा अच्छा है. कर सकते हो ट्रांजिशन. अभी आपने ओपन कर रहे हो ना, अभी आप बना रहे हो, रीब्रांड कर रहे हो ना उसको. हाँ.
तो ट्रांजिशन आप आराम से करो, थोड़ा सा 6 मंथ्स का ट्रांजिशन लो, और हॉस्पिटल में जो यहाँ पे आपका टाई अप है वहां से आप धीरे धीरे ट्रांजिशन लो। मीन्स थोड़े आवर्स मतलब मल्टी एक चालू छोटा रखो। हॉस्पिटल बैठना चाहिए थोड़ा सा फॉर एडमिशन Right. पर्पस। राइट। कर सकते हो मैम, कर सकते हो आप, लेकिन एक बात ये समझ के रखो कि एट द एंड ऑफ 1 ईयर 6 मंथ्स आप अपना ही सेटअप पे फोकस करोगे 100%। पर मेरा हॉस्पिटल मुझे खोलना नहीं है सर, तो फिर क्लिनिक पे ही फोकस रखूं पूरा। हाँ, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपका टाई अप अच्छा है, मतलब इफ देयर इज अ टाई अप पॉसिबिलिटी यू कैन हैव somebody nearby hospital, you can tie up where you can refer people, राइट। आप दो जगह पे नहीं रह सकते ना कि इन पेशेंट वहां पे भी देखता हूँ, अपना भी क्लिनिक होगा, फिर वो ग्रो नहीं करेगा। आप जितना फिर आपको एक लिमिटेड ग्रोथ में काम है, आपको अच्छा लगता है, तो यू कैन कंटिन्यू लाइक दैट ओनली। मतलब विजन तो एक सोलो क्लिनिक का ही रखना पूरे टाइम। ये आप पे डिपेंड करता है। नहीं मतलब वो हॉस्पिटल में अटैचमेंट मतलब बस थोड़ा सा लिमिटेड आवर्स जो हम आईपीडी देखते हैं वहीं पे रखना है। हाँ, वहां पे आप वैसे ही करो, आपके लिए अच्छा रहेगा वो करना। और धीरे धीरे आप ये सोचो कि आप अपनी क्लिनिक को कैसे एक्सपैंड कर सकते हो, मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक बना सकते हो, या फिर आप एक अच्छा स्मॉल 10 बेडेड हॉस्पिटल बना सकते हो, या 5 बेडेड हॉस्पिटल बना। आप थोड़ा सोचना पड़ेगा उस डायरेक्शन में, और धीरे धीरे आपको रास्ते दिख जाएंगे कि इस तरह से करना है, ठीक है ना। तो थोड़ा फोकस करना पड़ेगा आप अभी के लिए। यू कैन हैव बोथ द थिंग्स। ओके ओके, keep posting your videos. यस। Okay. Preeti is his hand. Preeti. Yes. Preeti, how are you? Preeti, yes. How are you? Unmute Please yourself. unmute yourself. सर गुड इवनिंग, आप कैसे हैं Good सर? evening. Yes. All good. सर छोटे छोटे 2 क्वेश्चंस हैं। हाँ। Wow. सर एक ये है कि जो क्लिनिक है ना उसकी हमने लीज तो पेपर्स पे कर ली है, उसके बाद कुछ भी हमने चीज पेपर्स पे नहीं की। मतलब जैसे हमने एम्प्लॉयज रखे हैं, जैसे पीआरओ रखा है, फिर जो हमारे जीडीए है, वो रिसेप्शनिस्ट है, उनको तो भी हमने, क्योंकि हमने उनको अब कर लिया है, वो आने शुरू हो गए हैं, उनका डेट स्टार्ट हो गए, तो वो पेमेंट के लिए मेरे को सर सीए गाइड करेंगे कि सेपरेट अकाउंट बनाऊं, कहाँ से उनको पेमेंट के लिए पेमेंट के लिए पूछ रही हो? देखो, 2 चीजें हैं फिर उसमें मिला है। वाह, एक चीज है कि आपने उनको ऑफर लेटर दिया? नहीं दिया अभी, क्योंकि है ही नहीं पेपर्स में कुछ भी। नहीं, तो आपको तो हमने रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एचआर टेम्पलेट दिए सारे, सब टेम्पलेट शेयर किया हुआ है ना। हमने अभी किया नहीं, मतलब मैंने पढ़े हैं लेकिन अभी हमने ये दिया ही नहीं उनको। हाँ, मतलब तो ये दूंगा ना। हाँ, अभी तो, और आपका तो वो भी बन गया है, पैड वगैरह, लेटर हेड वगैरह सब बन गया है, तो उस पे आप आराम से उनको ऑफर लेटर दो, और रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा लिख के दो कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, ठीक है। दिस विल बी ऑफिस टाइमिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सब थोड़ा सा लिख के दो। और उसके बाद साइन एक कॉपी उनको दो, एक कॉपी साइन करके अपने फाइल में रखो। और फिर आपका फाइनेंस वाला जो सैलरी वाला पार्ट आता है, आपके कितने, अगर लेस देन 10 आपके एम्प्लॉयज रहेंगे तो आपको पीएफ वगैरह का टेंशन नहीं है, तो आप डायरेक्टली आपने अभी अकाउंट कौन सा बनाया, प्रोप्राइटरशिप में, एलएलपी में? हमने बनाया नहीं अभी कोई अकाउंट। नहीं, कंपनी बनाई, लीगल कंपनी, क्लिनिक किसके नाम पे चलेगी? अभी पता नहीं किसके नाम ने, हमने तो बना भी लिया क्लिनिक, नहीं, लेकिन तो अभी तो आपके प्रोप्राइटरशिप पे चल रहा होगा, मतलब आप हरप्रीत से पूछना कैसे रहेगा। अगर सेविंग अकाउंट से जा रहा है तो आपका प्रोप्राइटरशिप ही होगा। तो जो भी हमने पेमेंट किया है, जो भी हमारे अकाउंट है, वो तो हमारे सेविंग अकाउंट्स ही है सर। हाँ, तो अब उसको फिर तुमको एलएलपी का लेना चाहिए। वो मेरे को सीए गाइड करेंगे ना सर, मैं हाँ, उनसे सीए गाइड करेंगे, और एक बार सीए का इनपुट हम लोग से डिस्कस कर लेना, तो आपको मालूम चल जाएगा। सिंस यू आर डायमंड मेंबर, वी कैन बी कनेक्टेड टू जूम कॉल, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एलएलपी कर लेते हो तुम दोनों लोग, क्योंकि इन्वॉल्व हो ही हो, राइट, सो आप दोनों के बीच में वो एलएलपी बन जाएगी, और एक करंट अकाउंट खुल जाएगा। उस करंट अकाउंट से यू कैन पे देम द सैलरी, वो आपके एक्सपेंसेस में दिखेगा, एंड जो रेवेन्यू आएगा वो भी उसी में आएगा। So that will save your income tax as well, and that will also help you in like all your जितना भी आपने अभी लिया था उस एक्सपेंसेस में शो कर सकते थे। मेरी मतलब मुझे अजीब सा लग रहा है कि पहले हम लोग ने ये बात क्यों नहीं किया है। लीगल थिंग तो सबसे पहले बात करना रहता है,
क्योंकि ये जो सारे एक्सपेंस है ना, ये चीज हम कंपनी के अकाउंट में दिखा सकते हैं, एंड देन वी कैन टेक बेनिफिट ऑफ बीइंग लॉस इन द फर्स्ट ईयर, सो कोई टैक्स उसके ऊपर नहीं जाएगा। सो वो सब चीजें अभी जो खर्चे आने वाले हैं वो दिखा देना। वो जो अब जो खर्चा हो रहेगा वो सब उस एलएलपी में। सो कनेक्ट विद मी, ठीक है, सीए से बात करके मेरे से कनेक्ट करो, इसको नेक्स्ट वीक आपको फाइनल करना होगा। ठीक है सर, यही मेरे को क्लियर करना था। ठीक है, और कुछ? हाँ, एक थोड़ा सा और था मेरे को। पूछो ना। ज्यादा था और पूछिए। सर मैंने सर को भी बताया था, अमित सर को, कि जो हमारे कुछ कोलीग्स हैं जिनके लैब्स हैं ऑलरेडी, वो लैब सेटअप करना चाहते हैं। हमारा था कि अभी हमारा फुटफॉल पहले बढ़ जाए फिर हमारे लैब सेटअप हो। अभी है कि पता नहीं आउट ऑफ कैसे ये हो रहा है कि जो हमारे पहले बड़े मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे वो मेरे को एक्सीडेंटली मिल रहे हैं, तो पता लग रहा है कि वो भी ये काम कर रहे हैं। तो मैं मतलब क्योंकि मेरे तीनों के साथ बड़ी अच्छी है, तो थोड़ा मेरे को हो रहा था कि अब मैं कमिट किसको करूं। तो वो खैर आई विल टेक डिसीजन, बट बात कर लेना, वी विल हैव अ डायमंड कॉल, ठीक है, उसमें हम लोग बात कर लेते हैं उसके बारे में। और देखो ये सोचना गलत है कि पेशेंट फुटफॉल होगा तब मैं ओपन करूंगी। ये तो वही काम हो गया कि दुकान में आदमी ने सामान रखा नहीं, वो बोला पहले कस्टमर आ जाए तो मैं सामान लेके आऊंगा। उल्टा होता है ना, सामान देख के कस्टमर आता है। सो वो तो आपको रखना ही है। फार्मेसी लैब आपको ऑप्शन मिलता है पार्टनरशिप में कर लेने का, तो कर लेने का। किसके साथ करना है वो एक अलग क्वेश्चन। ठीक है सर, है ना? ठीक है, चलो वो आप डिस्कस करो, नेक्स्ट वीक फिर बात करते हैं। यस सर। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। तुमने जो ब्रेव डिसीजन लिया तो अभी सब लोग आ गए तुम्हारे साथ। हाँ डरते सर हमने कभी सोचा नहीं था, सोच के बस हिम्मत कर करके ना 2-2.5 महीने में सर के बस हो गया। हम खुद के ऊपर हैरान है। नहीं, तुम यू हैव टेकन दैट ब्रेव डिसीजन है कि डायमंड में तुम आए, और जबकि हरप्रीत योर हस्बैंड वाज नॉट वेरी श्योर और यू हैव टेकन इट। तो धीरे धीरे देखो तुम्हारी जो ब्रेवरी थी वो साथ हो गया, और अभी देखो कहाँ कहाँ से भी रास्ते खुल जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो देख के हमको तो आई एम वेरी हैप्पी। यस्टरडे आल्सो वी हैड अ कॉल, तो I was discussing with Pranav sir कि हम तो I was very happy with looking your happy face. Harpreet was also there. Do you remember Harpreet पहले वीडियो पे भी आता नहीं था। अब वो मेरे से मैसेज करता है कि सर मेरे को बात करना है, तो I feel very happy. बनाएंगे सर, वो कहते कि मैं ना अमित सर को फोन करने लगा हूँ। मैंने कहा पूछ तो लो पहले कि मैं फोन कर सकता हूँ कि नहीं, वो बिजी है। कहते नहीं मैं मैसेज करूंगा ना पहले। मैंने कहा अच्छा। क्योंकि तो मैं कुछ ज्यादा अभी वॉशरूम में है, क्योंकि जब मैं कुछ कह देती हूँ ना फिर वो सर बाकी सारे मेरे एडवाइस लेते हैं। हस्बैंड को बोलती हूँ तो हस्बैंड तो उल्टा ले लेते हैं कई बार, पता नहीं कैसे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। नहीं ठीक है। You are God is kind to you and you just keep working towards your goals. Yes. God will be very kind to you. Yes. All the best. Thank you. Yeah. Neha Chandar. Yes. Hello, good evening, sir. Yes. Good evening, ma'am. Please. So I am Dr. Neha from Delhi. So I'm an ophthalmologist and my husband is an orthopedic surgeon. Okay. So we are planning to start a multi-specialty hospital as an OPD with OT, consisting of ortho, ophthalmology, and then planning to keep a general physician, dermatology, physiotherapy, and X-ray and pathology. Okay. So presently we are in the process for we are searching for a place actually. So I was just wanting to know, like, considering like the insurance sector in mind, like, is there a minimum requirement कि insurance के लिए हम इतने beds सकते हैं for the hospital? And आपका ऑर्थो है कि ऑप्थल है? I am an ophthalmologist. My husband is an orthopedic surgeon. No, your practice will be indoor. Both of you will be indoor the patients. Yeah, indoor भी रखेंगे sir, exactly. मतलब OPD, OT both. ऑर्थो अगर है तो 20 बेड्स होगा। Yes. लेकिन ऑफ्थल में 5 पे चल जाता है। अच्छा, दोनों combined will take the ortho वाले only. हाँ, okay, so 25 is the requirement then. नहीं 20 बेड्स। हाँ 20. Okay, ठीक है. And also wanted to know कि fire के लिए, like I read the documents जो दिल्ली में requirement है, तो उसमें ना basically उन्होंने mention किया कि ground floor and first floor पे fire NOC की requirement नहीं है. So is that true? ऐसा नहीं है, गलत पढ़ा।
ऐसा नहीं है। फायर एनओसी तो हर जगह रिक्वायरमेंट हो। आपने लीज पे ले रहे हो, आप अपनी जमीन ले रहे हो? लीज पे लेंगे। लीज पे ले रहे हो तो उससे जो ओनर्स है ना, उससे बोलो कि इसकी फायर एनओसी चाहिए। Fire फायर एनओसी वो देगा पूरी बिल्डिंग की। आप बोलोगे कि ये हॉस्पिटल सेक्शन की हमको अलग से अप्लाई करना है, तो वो उसका जो डिटेलिंग है, मतलब मैप्स एंड ऑल दोस थिंग और सारी ओनर के पास होता है। तो फायर एनओसी फॉर हॉस्पिटल इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ओनर। सो बिफोर यू गेट इनटू लीज, आस्क देम कि भाई फायर एनओसी तो आप करा के दोगे, खत्म कहानी। हाई राइज से कंपैरिजन में फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर का कंप्लायंस थोड़ा कम होता है, पर होता तो है। होता है। ओके। एंड आल्सो अबाउट द पार्किंग रिक्वायरमेंट्स, लाइक पार्किंग का भी कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है? दिल्ली में 50%। 50%। दिल्ली एरिया में रहता है। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप सोसाइटी में, डॉक्टर प्रणव सोसाइटी में दिल्ली में बहुत सारे मेंबर्स हैं, ठीक है? उनसे कनेक्ट करिए और उनसे आप कनेक्ट करके आप थोड़ा सा जो डाउट्स है ना, और भी लोकल लॉज के, बाई लॉज के, दिल्ली में तो इतने बाई लॉज है ना, मतलब उसका मतलब हम लोग का हर चीज माइंड पे होना बहुत मुश्किल है। तो आप उनसे कनेक्ट करो, और अगर ऑप्शनल में है, ऑर्थो में है, तब तो और भी बढ़िया है। और आप उनसे कनेक्ट करके यू यूज द प्लेटफॉर्म। ओके, डू नॉट थिंक कि कॉल होगा तो तभी पूछेंगे। यूज दैट डॉक्टर प्रणव सोसाइटी, कनेक्ट विद पीपल, आस्क देम दैट क्वेश्चन। हो सकता है आपको एक बहुत अच्छा एडवाइस और बहुत अच्छा कनेक्ट मिल जाए, है ना? ओके, परफेक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। शिवानंद जी बोलिए सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। एक्चुअली मैं मणिपाल में हूँ, नॉन मेडिकल टीचर हूँ न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में। अच्छा। लेकिन मैं इंक्यूबेटर में एक्चुअली इंक्यूबेशन करना चाहता हूँ स्टार्टअप के लिए। अच्छा, वेरी गुड सर। और इसके लिए वो डिजिटल होम हेल्थ केयर का प्लान है। अच्छा। जो कि वीडियो कंसल्टेशन के साथ साथ हेल्थ केयर सर्विसेज टू प्रोवाइड। तो इसके लिए हमने आगे अप्लाई किया इंक्यूबेटर में। उन्होंने बोला कि आप हमें प्रोजेक्ट में पहले बिजनेस प्लान बताओ। तो सर हमें हेल्प चाहिए कि कैसे बिजनेस प्लान बनाना चाहिए इसका। ओके। एक बात। दूसरी बात है कि डॉक्टर संदीप सर जो चेन्नई के हैं ना, वन ग्लैंस, उनसे भी बात की थी। हाँ। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली आप भी, उन्होंने भी यही बोला, बिजनेस प्लान पहले बनाओ तो फिर हम बता पाएंगे, क्योंकि आपके लिए हमें कस्टमाइज सॉफ्टवेयर रेडी करना पड़ेगा। राइट। क्योंकि वो जो अभी बना रहे हैं वो केवल रिकॉर्ड और इसके लिए कर रहे हैं, तो ये अलग से उनका सॉफ्टवेयर शायद चाहिए होगा। तो वो पहले बिजनेस प्लान चाहते। सर हमें हेल्प चाहिए कि बिजनेस प्लान कैसे बनाएं ताकि मैं अप्लाई कर पाऊं स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन में। और कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, कौन से इंक्यूबेटर पे अप्लाई कर रहे हैं? ये माहे का बायो इंक्यूबेटर है, बायरेक का। एक्चुअली वो डीएसटी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का, लेकिन वो मणिपाल में है, माहे मणिपाल यूनिवर्सिटी में। हाँ। ओके गुड है। वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे ग्रांट भी अच्छे से मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी, क्योंकि हेल्थ केयर में इतने स्टार्टअप आते ही नहीं है। वो ये कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच्ड है, केएमसी मणिपाल। हाँ, तो आप अप्लाई कर सकते हो, आराम से मिल जाएगा। बस आपको एक बिजनेस प्लान दिखाना पड़ेगा कि जैसे आपने प्रोजेक्ट सोचा है और क्या उसके। तो मैं आपको एक टेम्पलेट भेजता हूँ, ठीक है? बिजनेस प्लान का टेम्पलेट भेजता हूँ। स्लाइड वाइज टेम्पलेट होगा, आप उसको समझ के फिल करते रहना कि अच्छा इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। और 20 स्लाइड में वो बिजनेस मैप, रोड मैप हो जाएगा। सर ऐसा कोई टेम्पलेट वगैरह भी है क्या? हाँ है, बिजनेस पिच डेक बोलते हैं स्टार्टअप की भाषा में। तो पिच डेक का मैं आपको एक टेम्पलेट भेजूंगा हेल्थ केयर स्पेसिफिक। वो आप पढ़ना, समझना, उसको फिल करना। इफ यू वांट यू कैन सेंड मी बैक, आई कैन रिव्यू इट और आपको मैं फीडबैक दे दूंगा, ठीक है ना? तो आप मेरे को एक मेल ड्रॉप कर देना सर, connect@drpreneur.academy में। मैं उसी पे रिप्लाई कर दूंगा आपको। कौन से मेल पे सर? कनेक्ट, मैं लिख दे रहा हूँ, कनेक्ट जो मेन मेल आईडी है ना, जिससे सब मेल्स आपके पास आते भी होंगे। connect@drpreneur.academy। ठीक है, मेल आप इसी पे रिप्लाई करूंगा। ठीक है। एक्चुअली मैंने हैकाथॉन में अप्लाई किया था, वहां से मेरा प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गया। अच्छा, वेरी गुड। और वो दे लाइक्ड एक्चुअली वेरी मच।
and they told कि आपने हैकाथॉन में जो अप्लाई किया हो वो भी तो आपने कुछ पीपीटी दिया होगा ना उनको? हाँ, नहीं उसमें बिजनेस प्लान पूरा बनाया नहीं था हमने, केवल ये दिया था कि हम कैसे करेंगे, हाँ, उसी को और कैसे मैनेज करेंगे उसको, और वेदर इसमें प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, इतना केवल दिखाया था। तो वो जो प्रॉफिटेबल दिखाने का मतलब वो उस तरीके का था नहीं जो इनको अभी प्रॉपरली गवर्नमेंट को अप्लाई इनक्यूबेटर में डालने के लिए चाहिए। वो बोल रहे हैं बिजनेस प्लान का एक प्रॉपर तरीका होता है, उस वैसे आपको डालना होगा। करेक्ट, वो मैं भेज देता हूँ आपको। आपने जो हैकाथॉन में किया होगा उसी को एक्सपेंड करना है, वही डिटेल्स को थोड़ा सा एक्सपेंड और स्ट्रक्चर तरीके से भेजना है। उसमें सर वैसे ही केवल पीपीटी में ऐसे बस केवल कैलकुलेट कर करके दिखा दिया था कि इतने हमारे हेल्थ केयर स्टाफ पे खर्च होंगे, इतना हमारा फार्मेसी में, इतने एम्बुलेंस पे ऐसे करके होंगे, मतलब ना एक रफ जैसे कैलकुलेशन टाइप का किया था, लेकिन उनको आइडिया और प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो आप कर सकते हो सर, मैं आपको भेज दूंगा, मेल कर देना लेकिन प्लीज। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, फिर मैं कांटेक्ट में रहूंगा सर आपके। जी जी, ऑल द बेस्ट सर। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, फैंटास्टिक। फायर ऑन एसएमएस, प्लीज सजेस्ट व्हाट्सएप। अभिजीत, व्हाट्सएप एजेंसी के लिए, व्हाट्सएप ऑटोमेशन एजेंसी के लिए आप मेरे को मेल करो। ओके, सो जिसको व्हाट्सएप एजेंसी, व्हाट्सएप ऑटोमेशन वाला पार्ट चाहिए, जस्ट सेंड मी अ मेल या टेलीग्राम ग्रुप में भी लिंक पोस्ट कर देना, सो दैट आई डोंट फॉरगेट इट। ओके, मैं एक दो लोगों का तो नाम मैंने नोट कर लिया है, बट और किसी को चाहिए होगा तो वो मेरे को बता देगा। Can you suggest some good architect for new block building expansion? हाँ सर, दिनेश सर आपको आर्किटेक्ट के बारे में हम बता देंगे। आर्किटेक्ट आपको हेल्प चाहिए ना? ठीक है, मैं भेज दूंगा डिटेल्स। ओके, फैंटास्टिक। सो ऑलमोस्ट आई थिंक, अच्छा लास्ट क्वेश्चन, अभिषेक पाल, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। Yes, Abhishek. Last. Please unmute, go ahead. Yeah, you can unmute and start your video also. Hello. Hello, Yes, Abhishek. yes, go ahead. सर एक्चुअली मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ और मैं एक आई हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ। कहाँ पर हो आप? मैं ये इट्स दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल, दुर्गापुर में। ओके ओके। मैं अभी जॉब कर रहा हूँ एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप यू शुड बी वेरी गुड इन रिलेशनशिप मेकिंग, कि आपको ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से चाहिए होंगे एज अ पार्टनर। ओके, क्योंकि आप अपना सेटअप खोलोगे, कंसल्टेंट बुलाओगे, लिटिल डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा सा करने में। इफ यू मेक देम अ पार्टनर ऑफ योर सेटअप, it will be very easy for you to start that hospital. ओके, मतलब उनको कुछ पार्टनरशिप, मतलब उनको कुछ परसेंटेज इक्विटी देके उनसे पार्टनरशिप। हाँ, पार्टनर देखो, इक्विटी दोगे तो दे ऑल्सो इन्वेस्ट ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि पार्टनर ऐसे ही आप बना दोगे। आस्क देम टू इन्वेस्ट। ओके, सो जैसे बिजनेस प्लान की बात हुई, वैसे ही बिजनेस प्लान आपका भी साथ होना चाहिए, एंड शेयर दैट बिजनेस प्लान विद 100 ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, उसमें से 100 में से शायद 10 लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे और शायद 2 लोग आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ, वही 2 लोग आपको चाहिए। तो आप बताओगे कि सर ये एक्स अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है, और आप पार्टनर बनते हैं, इक्वल पार्टनर इक्वल इन्वेस्टमेंट, और सब मैं रन करूंगा पूरा हॉस्पिटल, ऑपरेशनल, मैनेजिंग एवरीथिंग, एंड यू लुक आफ्टर द पेशेंट, एंड वी विल हायर समबडी फॉर मार्केटिंग, और वी विल रन अ गुड हॉस्पिटल। तो people will be happy to have a one partner who is looking after the operation and managing the HR and all the stuff, right? Okay. मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट के साथ साथ MBA in HR भी किया हूँ। हाँ, तो और भी अच्छा, look after MBA, hiring, all those things, so people will be happy to have a partner like that, है ना? तो आप बता सकते हो। एक हमारे पटना में एक मेंबर हैं who is of your profile, and he has I think 2 hospital now. Okay. One day he started very initially, now second he started now. वो आप ही की प्रोफाइल के हैं, but he is very good in relationship making, how to convince people, how to sell your vision. See, everything at the end of it, how you sell your vision to the people will matter. ठीक है ना? Yes. तो वो बहुत क्लियर हो जाओ, विजन बहुत क्लियर कर लो कि कैसे काम करना है, क्या करना है, and what is your part and what you expect from other person. ठीक है ना?
and how you will share revenue and all those things, वो सब clear हो जाएगा ना. Initially आपको थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा कम भी लोगे और दूसरे को थोड़ा ज्यादा भी दोगे तो भी it's okay because you have a bigger vision. Okay, कल वहां हम लोग को नेक्स्ट लेवल पे जाना है, एक के जगह पे 2 हॉस्पिटल, बड़े ट्रस्ट बनाकर एक अच्छा चीज भी करना है. तो यू थिंक ऑफ अ बिगर अपॉर्चुनिटी, और स्टार्टिंग में अगर थोड़ा सा देना भी पड़ जाए तो इट्स ओके. ठीक है ना. पर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है सर, जैसे कैसे फंड्स वगैरह मिलेंगे, उतना तो एक हॉस्पिटल बनाने कितना पैसा लगता है 5 बेड बनाने के लिए. अभी आप जो पढ़ रहे हो उसके बाद इफ यू वांट यू कैन हैव अ 2-3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सम हॉस्पिटल. ठीक है, एक हॉस्पिटल में अच्छे से काम करो, बड़े हॉस्पिटल में काम करो या चेन ऑफ हॉस्पिटल में जहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का ऑपरेशन एंड एवरीथिंग इज डन. वहां पे यू विल हैड अ 360 डिग्री व्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ रनिंग ऑफ अ सेटअप, है ना. वहां से यू विल लर्न एंड देन इम्प्लीमेंट. डायरेक्टली यू डू नॉट डायरेक्टली जंप मत करो. हाँ, ठीक है. So you have a good education background. Take this education, work in some time in some that setup, understand inside working, and उसके लॉजिस्टिक्स का थोड़ा ट्रेनिंग करना. मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मुझे लोन वगैरह लेके खोलना चाहिए या कैसे करना चाहिए. एक आइडिया है मुझे कितना होना चाहिए. एक बिजनेस प्लान बनाया हूँ खुद, टोटल इंस्ट्रूमेंट्स और टोटल स्टाफ वगैरह का खर्चा ऐसे करके, लेकिन आइडिया नहीं कि कितना लोन लेना चाहिए या फिर कितना घर से लगाना चाहिए, कुछ आइडिया नहीं है. नहीं, वो देखो आइडिया, पैसा लगाने की बात तो वही चीज हो गई ना कि तुमको मारुति कार खरीदनी है या तुमको फरारी खरीदनी है. अब उसके लिए तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा ना कौन सी कार खरीदनी है, फिर वो पैसा डिसाइड पहले मारुति लेना है सर. हाँ, मारुति लेना है तो मारुति के लिए आपको आपका 5 सीटर है, 2 सीटर है, 3 सीटर है, पीछे सीएनजी है, क्या है वो डिसाइड करना पड़ेगा ना. पहले बेसिक खोलना है सर. आपका बेसिक जो आपने प्लान बनाया ना हमारे साथ लो, और सर पहले वो डिसाइड करो, अपना विजन डिसाइड करो, और उसके बाद पार्टनरशिप देखो. जैसे अगर कोई पार्टनर इन्वेस्ट कर रहा होगा पैसा तो फिर आपके लोन अमाउंट कम हो जाएगा, राइट. तो वो सारे पैरामीटर्स हैं. लोन भी ले सकते हो, पार्टनरशिप से भी पैसा आ सकता है, इट ऑल डिपेंड्स. तो सबसे मुझे ऐसा लगता है यू शुड हैव एन एक्सपीरियंस. अभी आपको एक्सपीरियंस उस चीज का है नहीं, रनिंग ऑफ एन सेंटर, तो वो एक्सपीरियंस लेकर आप अपना सेंटर खोलो. ठीक है. ओके, ठीक है सर, थैंक यू. गौरव जी, मैंने आपको ना एक लिंक दिया है, इक्विपमेंट मेडिकल इक्विपमेंट प्लानिंग. अगर जैसे कोई स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम वगैरह का आपको एजेंसी का नाम, कोटेशन वगैरह चाहिए तो ये लिंक दिया है, आप वो देख लो. वो पैकेज में अगर आप करोगे तो हमारी टीम का जो बायोमेडिकल इंजीनियर है, ही विल हेल्प यू आउट इन फाइंडिंग राइट पर्सन, राइट वेंडर. ठीक है. और गजेंद्र कुमार कह रहे हैं planning to start NICU diagnostic center in Delhi. Should I go for refurbish or new equipment? अच्छा, so this debate around refurbish or new, ये हर इसमें स्पेशलाइजेशन में हो रहता है. ठीक है. इसके जो पैरामीटर हैं, किस पे हमको डिसीजन लेना है, वो डिपेंड करता है कि आपका अभी का बजट कितना है, आपका बजट क्या है, और आप कितना कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो महीने में एक बार यूज होते हैं, और कुछ इक्विपमेंट होते हैं जो रोज यूज होते हैं, रोज 10 टाइम यूज होते हैं. तो वो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेस एंड द बजट यू राइट नाउ यू आर हैविंग. सो फॉर एग्जांपल कैट लैब में हम लोग बोलते हैं कि यस यू कैन गो अहेड विद द रिफर्बिश, बिकॉज रिफर्बिश जो आती हैं वो यूरोपियन क्वालिटी की आती हैं, दे आर वेरी गुड, एंड उनका इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग इज डन बाय बिग कंपनीज, so दे आर वेरी वेरी गुड. सो उनमें कोई ज्यादा डर की बात नहीं होती है. बट कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो रोज यूज होती हैं, उनकी लाइफ खत्म हो चुकी है, उसको रिफर्बिश करके बेच रहे हैं, दैट इज नॉट एडवाइजेबल, राइट. तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप अगर कैट लैब जैसी बड़ी चीजें ले रहे हो, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और क्वालिटी आपको मतलब 50% कम में मिल रहा है, क्वालिटी ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, और 2 साल में आप नया रिप्लेस कर दोगे, देन गो फॉर रिफर्बिश. बट स्मॉल चीजें हैं, वेंटिलेटर है, ये है,
उनके लिए रिफर्बिश्ड में जाने की जरूरत नहीं है। उससे तो अच्छा होता है कि आप एक मेडिकल इक्विपमेंट लोन ले लो और उसको न्यू इक्विपमेंट लो और वहां पे लोन फर्निश कर दो, ज्यादा अच्छा है देन द रिफर्बिश्ड थिंग्स। एंड इन द डायग्नोस्टिक्स एंड द NICU इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो आपको मतलब नए में भी यू गेट वेरी गुड क्वालिटी इन अ गुड प्राइस। गो टू द बेस्ट इन द मार्केट, दे आर एवरेज वर्किंग इन मशीन्स व्हिच आर वेरी गुड। तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं, रिफर्बिश में जाने की जरूरत नहीं है। ओके सर, ओके सर। गो विद बहुत ज्यादा महंगा इक्विपमेंट कोई है, कौन सा इक्विपमेंट है जो आपको लगता है रिफर्बिश में आपका पैसा बच रहा है? व्हाट इज थिंकिंग? सबसे मैक्सिमम टॉप वेंटिलेटर्स ही हैं सर, वेंटिलेटर्स और HFO। आप कितने वेंटिलेटर स्टार्ट करना है? कितने? हाँ, मिनिमम 2 वेंटिलेटर से स्टार्ट करना चाहते हैं। स्टार्ट फ्रॉम 1 or 2 which is Indian made or maybe Chinese। टू में जाओ तो रिफर्बिश की जरूरत नहीं है ना? ओके सर। Rest of the questions I'll be answering them on your email, in the email. We already have. We have covered all the questions. And Abhijit Ranjan, thank you so much. We are helping. You are also there and helping each other. सब doctors and सब community के लोग एक दूसरे की help कर रहे हैं. Thank you so much. It's not only us; it's everyone here. Okay. So great talking to all of you, and be active in the community. Join the 21-day challenge and post your videos daily. Yes. जिन लोग ने नहीं स्टार्ट किया, स्टार्ट योर जर्नी। ओके, 21 मार्च को कंप्लीट हो जाएगा। एंड नेहा जी, आपको मैं लिंक मेल कर देता हूँ सोसाइटी का, ठीक है? यू विल गेट अ लिंक एंड यू क्लिक एंड ज्वाइन द सोसाइटी। अगर आप सर्च करोगे डॉक्टर प्रणव सोसाइटी इन योर मेल लिस्ट, वो भी होगा, आपके पास मिल जाएगा। स्टार्टिंग में सारे मेल्स आते हैं, जब आप ज्वाइन करते हो तो सब मेल्स आपके पास आते हैं। फिर भी मैं 21 को एक सरप्राइज अनाउंसमेंट भी है। Keep your fingers crossed for that. Yes, 21 ko we will have a surprise announcement, the closing of that challenge and the announcement of the winners of that challenge, and there is surprise announcement as well. Okay. Yeah. Fantastic. All the best. Bye. And thank you. Share the Facebook group. Facebook में link आपको share कर दूंगा. Please share your reviews and your feedback on that link. Thank you. Thank you so much. Okay. Bye bye. Take care.